And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it, and what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. So that's not regulated. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. 11. मैम, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 1 to 4. Good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is a one particular announcement which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump except those who are not blended from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended.
And this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal, but the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी, हमारा आपसे आसिफ इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा। ये किस तरीके से? ये किस तरीके से? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। यही है तरीका। Okay, 175. मैम, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, आपने बजट में 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक IBC अमेंडमेंट्स को लेकर। मैम, किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप देख रही हैं IBC के अंदर जिससे रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो पाए? और दूसरा मैम, आपने कहा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। मैम, किस तरीके के कंसर्न्स उन्होंने आपके सामने रेज किए हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि रेगुलेटर आर्बिट्राज या फ्रिक्शन जो है उसको दूर किया जाए, तो क्या कंसर्न्स प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट के? No, there could be any number of concerns, but once when they met me and once when they met the Honorable Prime Minister, they went into a lot of details which are important from the point of view of ease of doing business and also better understanding that sector. If all of us can see the point that private equity in India venture capital funds have been one of the prime reasons why many of the startups could rise to become unicorns within first 6 months of this year itself. Last year, 21 itself, you saw how many of them benefited by funds being made available in India through private equity. Now, if that sector needs further facilitation, obviously the sector will have to sit and talk with
a group of people who can understand their needs and then suggest solution for policy making. That is why I have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with suggestions. 255. Ma'am, Gyaneshwar Dayal from Jan Express. I have a question, actually two questions. When can we expect the farmers' income to double? Number one. And When number can we expect the pharmaceutical? farmers' income to double? It was supposed to double in 2022. And how far is the goal of 5 trillion economy? And in what way your budget would take us there? Thank you. Who wants to? Will Ananta Nageshwaran want to answer it? So if you look at the amount of minimum support prices that was given out this year and also the record procurement, so we are well on our way to helping the Is farmers. your mic all right? Or do you want to, the voice is not coming out. So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. Those statistics are given in Madam's speech document as well. As far as the $5 trillion economy size is concerned, if you look at the fact that in the year ending 21-22 as well as in the next financial year, we are the fastest growing economy among large economies, and our GDP in dollar terms has already crossed $3 trillion. So depending on how the exchange rate moves, and there is enough hope to believe that the Indian rupee will in fact remain stable to strong given what is going on in the developed world. And if we continue to retain the path of 8% real GDP growth, it will translate into even 8% dollar GDP growth. So therefore, if we extrapolate it, in the financial year 25-26 or by 26-27, with some luck even by 25-26 itself, we should be at the $5 trillion size in terms of nominal GDP. Thank you. मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ. Sorry, I didn't get your name. Gyanesh.